Hey, this is your RV and good morning YouTube. Today I have ordered a special product for enhancing my filming experience and all the video that I make, which is the DJI OSMO. I have bought it from Amazon और इसका exact precise दाम जो है वो 9,999 है. Could call it as 10,000. And I have ordered it from Amazon because ये GearBest और Banggood और इन सब पे भी available था, because I'm going on a short trip on this coming weekend, which is on Saturday. तो as you know कि GearBest और Banggood और इन सब में at least it takes a week to 10 days to get it delivered onto your address. So I have ordered it from Amazon, and the delivery was very good because the one thing is that I have opted for Prime membership, and the packaging of this particular box, इसके ऊपर और कोई further packaging नहीं की थी उन्होंने, like the Amazon stuffing and all those stuff. Just it was the Osmo box and उसके ऊपर address का label and all those stuff. So have a look of the unboxing of this particular thing, and then I'll show you the functionality and all those stuff further. So I'm switching on off the camera, which is the selfie camera or the front camera of my phone, and I'm showing you the glimpse of the box and then the unboxing of it. Enjoy. Alright guys, so let's start the unboxing of DJI OSMO. ये I think so मैनुअल है, और क्या है इसके अंदर, एक और कुछ है यार. रुको 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 रुको, let me check, I'll kill dead people. Osmo Shield, scan QR code for, अच्छा ये ऐप के लिए I believe. Okay, ठीक है, चलो इसको करेंगे बाद में. Let's take out the Osmo. Oh my god, nice. इसको पैकिंग की क्या जरूरत है यार, ये तो ऑलरेडी इतना अच्छा पैक है. देखो, see, DJI. Okay, इधर से खुलेगा ये. Oh wow, nice. Goodie. And this is DJI product. The gimbal. चलो, अनबॉक्सिंग में ऐसा कुछ खास नहीं था. ये एक इसकी चार्जर केबल है, ये एक मैनुअल मिला मेरे को, और obviously the most precious gimbal. अब थोड़ा कूल शॉट्स लेते हैं इसका, फिर इसको ऑन करेंगे. ऐसा नहीं है, कोई नया डिवाइस खरीदने के बाद हम उसको घर में ही शूट करते हैं. शूट करने के लिए हम आए हुए हैं
एक अच्छे खासे मार्केट में। Look at this. This is the place. नहीं समझे, समझाता हूँ। दिस इज़ चंडीगढ़ सेक्टर 17 और अभी हम मेन डिस्ट्रिक्ट सेंटर चलते हैं जहाँ पर इसको टेस्ट किया जाएगा, इसके टाइम लैप्स, हाइपर लैप्स और बाकी सारी चीज़ें। सॉरी फॉर द लाइट, एक्चुअली यहाँ पे है नहीं उतना। लेट मी नो कि कैसा परफॉर्म कर रहा है इन दी वीडियो न्यूज़। बाकी आप अभी जाओ पहले दिल्ली से वापस यहाँ पे आओ, तब तक मैं पहुँचता हूँ उस जगह पे जहाँ मुझे शूट करना है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का टाइम लैप्स। अब एक काम करते हैं, यहाँ का टाइम लैप्स लेके देखते हैं हाउ डज एफिशिएंटली इट परफॉर्म्स। ऑल्दो यहाँ पे लाइटिंग का इशू है, बट लेट्स ट्राई। नहीं हो पाया, इसके लिए कोई जगह रखनी पड़ेगी जहाँ पे कैमरा रख करके टाइम लैप्स लाया जा सके। हाथ में तो बड़ी दिक्कत है यार। लेट्स सी, कोई जगह देखते हैं। फ़िलहाल के लिए तो मार्केट एक्सप्लोर किया जाए। इसको हाथ में लेके चलते हैं और देखते हैं कि कितना स्क्रीन फ्लिकर करता है या फिर कितनी स्टेबिलिटी है इसमें।
व्हाट्स अप पीपल। तो गिम्बल की हार्डकोर टेस्टिंग करने के लिए हम लोग आए हुए वापस बागी। होप सो आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा, उस समय 2-3 लोग थे तो थोड़ी हेल्प मिल जाती अगर उस टाइम पे मेरे पास गिम्बल होता गिम्बल की टेस्टिंग के लिए। द थिंग इज़ नाउ कि आई हैव टू ड्राइव एंड आई हैव टू हैंडल द गिम्बल एज वेल। तो इसके लिए जितना हो सकेगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच आई शो यू द स्ट्रेच इज़, मतलब वो तो अभी ऐसे भी दिख जाएगा व्हेन आई स्टार्ट ब्लॉगिंग। पीछे पूरा एप्पल फार्म है, एप्पल की खेती होती है। एंड FYI द फोन इज करेंटली माउंटेड ऑन द गिम्बल, इसलिए आपको शेक्स और फ्लिकर्स थोड़े कम दिख रहे होंगे। स्मूथ सिनेमैटिक शॉट। पीछे पूरा बागी का एरिया है, द हाईएस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ से मैं ऑफ रोडिंग थोड़ी दिखाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि नहीं आई हैव टू मैनेज द स्टीयरिंग नाउ, वहाँ पे मैं फ़ोन अंदर रख दूँगा। बाकी टाइम आई विल पुट माई हैंड आउट ऑफ द विंडो और एक हाथ से जितना हो सकता है दिखाने की कोशिश करूँगा। होप सो इट विल नॉट बी रिस्की, लेट्स सी। जस्ट अ व्यू ऑफ द ऑफ रोडिंग ट्रैक दैट वी हैव टू फॉलो एक्चुअली। ये है रोड, इधर से जो गाड़ी आ रही है। दिस इज़ अ रोड एक्चुअली। ऊपर भी दिख रहा होगा आपको, अरे कैसे घूमता है ये देखो, यहाँ से ट्रक्स आ रही हैं। दिस पर्टिकुलर हेडफोन सबसे पहले उस पर नज़र जाएगी, क्योंकि एक्चुअली आई एम सिटिंग इन दी मॉल रोड शिमला। रीज़न कि वहाँ पे एक्चुअली शूट नहीं हो पाया, although I have tried, but it's very difficult to hold the gimbal from one hand and drive from the another one, and that's not safe actually. So hardly मैं 20-30 सेकंड की वीडियो वहाँ पे शूट कर पाया। Then I have driven all the way to Shimla. Now I'll check over here कि I'll walk around the mall road street and we'll check कि यहाँ पे कितनी उसकी stability है, how the performance is. I'll also use the active tracker in the low light actually, क्योंकि normal light में तो काम कर जाता है, लेकिन low light में देखना है हमें कि how does it work in low light. Although मैंने सुना है कि OSMO का active tracker, लाइव ट्रैकर या एक्टिव ट्रैकर जो भी कहते हैं उसे इज़ वेरी गुड, बट लेट्स सी कि ये कैसे काम करता है। Although I don't have any external mic, so that's why I'm using my phone headphone. होप सो कि आवाज़ क्लियर आ रही होगी। यार क्या हो गया, एक्चुअली बहुत थक गया हूँ यार। बाय द वे, जस्ट हैव अ लुक ऑफ द मॉल रोड। इट्स राइट नाउ द टाइम इज़ 6:20 in the evening। अपन अकेले बैठे हैं। Have a look. I'll switch the camera towards the rear one so that you can have a glimpse of the Shimla. Oh, sorry.